and access to resources and supply chains are disrupted. New technologies are transforming production systems while sharply increasing demands on water, energy, and critical minerals. India will continue to take confident steps towards Viksit Bharat, balancing ambition with inclusion. As a growing economy with expanding trade and capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable long-term investment. As I begin Part A, I want to express my gratitude to the people for standing firmly with us as we forge our way together towards becoming one of the largest economies of the world. Our aim is to transform aspiration into achievement and potential into performance as we ensure that the dividends of growth reach every farmer, the scheduled caste, the scheduled tribes, the nomads, the youth, the poor, and the women. In Viksit Bharat Young Leaders Dialogue 2026, several innovative ideas were shared with our Prime Minister, which have inspired many of the proposals, making this a unique Yuva Shakti-driven budget. Our government's sankalp is to focus on our poor, underprivileged, and the disadvantaged. To deliver on this sankalp, and given that this is the first budget prepared in Kartavya Bhavan, we are inspired by three Kartavya. गुड मॉर्निंग एवरीवन, राम राम, राधे राधे, हर हर महादेव। क्या हाल है सबके, कैसे हैं आप लोग? चलिए सुनेंगे अभी बजट, पूरी तरीके से सुनेंगे, ठीक है? और कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट, ठीक है? कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, डोंट वरी। क्या करना है आप लोगों को, आराम से बजट सुनिए, उसके बाद में हम कमेंट्री करेंगे। बजट के टाइम पे सुन लेते हैं क्या बोलते हैं, ठीक है? साल में एक बार ही बोलते हैं, तो सुन लेते हैं क्या बोलना है नहीं बोलना है, उसके बाद देखते हैं क्या है नहीं है, ठीक है? चलिए जी, राम राम, राधे राधे। ओके, आई एम गोना start the sound again, noise again, okay? The vision of Sabka Saath, Sabka Vikas is to ensure that every family, community, region, and sector has access to resources, amenities, and opportunities for meaningful participation. This threefold approach requires a supportive ecosystem. The first requirement is to sustain the momentum of structural reforms, continuous, adaptive, and forward-looking. Second, a robust and resilient financial sector is central to mobilizing savings, allocating capital efficiently, and managing risks. Third, technologies, including AI applications, can serve as force multipliers for better governance. Reform Express. Our government has undertaken comprehensive reforms towards creating employment, boosting productivity. आवाज वगैरह सब ठीक है ना? Everything fine? Prime Minister's mandatory quality control orders. High-level committees have been formed, and in parallel, the central government is working with the state governments on deregulation and reducing compliance requirements. The Reform Express is well on its way and will maintain its momentum to help us fulfill our kartavya. I now move to specific proposals. Under our first kartavya, to accelerate and sustain economic growth, I propose interventions in 6 areas. 1. Scaling up manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. As expected, manufacturing पर बहुत ज़्यादा focus है. Rejuvenating legacy industrial sectors.
3. Creating champion MSMEs. 4. Delivering a powerful push for infrastructure. 5. Ensuring long-term security and stability. And 6. Developing city economic regions. Scaling up of manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. Biopharma Shakti, meaning biopharma strategy for health advancement through knowledge, technology, and innovation. India's disease burden is observed to be shifting towards non-communicable diseases like diabetes, cancer, and autoimmune disorders. Biologic medicines are key to longevity and quality of life at affordable costs. To develop India as a global biopharma manufacturing hub, I propose the Biopharma Shakti with an outlay of 10,000 crores over the next 5 years. ऐसे ही तो फार्मा स्टॉक्स पे बाइंग नहीं आ रहा है, that is the reason. The ecosystem for domestic production of biologics Look out for and biopharma biosimilars. stocks. The strategy एक will स्टॉक बताता हूँ, अच्छा दिख रहा है, सुदीप फार्मा. focused network with 3 new national institutes of pharmaceutical education and research, popularly known as NIPERS, and upgrading 7 existing ones. It will also create a network of 1,000 accredited India clinical trials sites. We propose to strengthen the Central Drug Standard Control Organization to meet global standards and approve timeframes through and approval timeframes through a dedicated scientific review cadre and specialists. India's semiconductor mission 1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full-stack Indian IP, and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. The Electronics Components Manufacturing Scheme, launched in April 2025, with an outlay of 22,919 crores, already has investment commitments at double the targets. We propose to increase the outlay to 40,000 crores to capitalize on this momentum. A scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote अर्थ स्टील एंड अलॉय देख स्टॉक बहुत बढ़िया है पेनी स्टॉक के हिसाब से. To enhance domestic chemical production and reduction import dependency and reduce import dependency, we will launch a scheme to support states in establishing 3 dedicated chemical parks through challenge route on a cluster-based plug-and-play model. Strong capital goods. Strong capital goods capability is a determinant of productivity and quality across different sectors. Towards building this capacity, I propose the following. High-tech tool rooms will be established by central public sector enterprises at 2 locations as digitally enabled automated service bureaus that locally design, test, and manufacture high-precision components at scale and at lower cost. 2. A scheme for enhancement of construction and infrastructure equipments will be introduced to strengthen domestic manufacturing of high value and technologically advanced CIE. This can range from lifts in a multi-storied apartment or firefighting equipment in multiplexes, large or small, and to tunnel boring equipments
for building metros and high-altitude roads. I also propose a scheme for container manufacturing to create a globally competitive container manufacturing ecosystem. गुड मॉर्निंग एवरीवन। बजट सुन लेते हैं, उसके बाद सारा चीजें डिस्कस करेंगे, कहाँ पे क्या हुआ है, नहीं हुआ, क्या बताया जा रहा है, नहीं जा रहा है। ठीक है, आराम से देखिए, बीच बीच में कुछ आया तो मैं बताऊंगा। Program with 5 subparts. 1. The National Fiber Scheme for self-reliance in natural fibers such as silk, wool and jute, man-made fibers and new age fibers. Textile expansion and employment scheme to modernize traditional clusters with capital support for machinery, technology upgradation and common testing and certification centers. 3. The National Handloom and Handicraft Program to integrate and strengthen existing schemes and ensure targeted support for weavers and artisans. XOEBQU initiative to promote globally competitive and sustainable textiles and apparels. Samarth 2.0 to modernize the upgrade the textile skilling ecosystem through collaboration with industry and ये academic टेक्सटाइल के ऊपर बहुत institutions. अच्छा बात किया गया है। ठीक है, ऐसे तो ईयू का ट्रेड डील के बाद भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा Further, फोकस आने वाला I है, propose to set तो up a निकालिए mega टेक्सटाइल स्टॉक्स को निकालिए। I propose to set up mega textile parks in challenge mode. They can also focus on bringing value addition to technical textiles. I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, one district, one product ODOP initiative and also our rural youth. India has the potential to emerge as a global hub for high quality, affordable sports goods. I propose a dedicated initiative for sports goods that will promote manufacturing, research and innovation in equipment design as well as material sciences. Rejuvenation of legacy industrial clusters. I propose to introduce a scheme to revive 200 legacy industrial clusters to improve their cost competitiveness and efficiency through infrastructure and technology upgradation. Creating champion SMEs and supporting micro enterprises. Recognizing MSMEs as a vital engine of growth, I propose a 3-pronged approach to help them grow as champions. Equity support. I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria. I also propose to top up the Self-Reliant India Fund set up in 2021 with 2,000 crores to continue support to micro enterprises and maintain their access to risk capital. Liquidity support. With TREDS, more than 7 lakh crore has been made available to MSMEs. To leverage its full potential, I propose 4 measures. 1. Mandate TREDS as the transaction settlement platform for all purchases from MSMEs by CPSEs, serving as a benchmark for other corporates. 2. Introduce a credit guarantee support mechanism through CGT MSE for invoice discounting on TREDS platform. 3. Link GEM with TREDS for sharing information with financiers about government purchases from MSMEs, encouraging cheaper and quicker financing.
ये दे रहा है एमएसएमई को अच्छा सब्सिडी दे रहा है, बोल के Introduce फायदा है नहीं, receivables स्मॉल कैप्स को as अच्छा फायदा है। asset-backed securities, helping develop a secondary market, enhancing liquidity and settlement of transactions. कोई स्ट्राइक नहीं आएगा, कोई स्ट्राइक नहीं आएगा। Professional support. Government will facilitate professional institutions such as the ICAI, ICSI, ICMAI to design short-term modular courses and practical tools to develop a cadre of corporate mitras, especially in Tier 2 and Tier 3 towns. These accredited para-professionals will help MSMEs meet compliance requirements at affordable costs. Infrastructure. During this past decade, our government has undertaken several initiatives for large-scale enhancement of public infrastructure, including through new financing instruments such as Infrastructure Investment Trust in WITS and Real Estate Investment Trust REITs, and institutions like NIIF and NABFID. We shall continue to focus on developing infrastructure in cities with over 5 lakh population, that is Tier 2, Tier 3 cities. We have expanded to become growth centers. Public capital expenditure has increased manifold from 2 lakh crore in 2014-15 to an allocation of 11.2 lakh crore in BE 25-26. वादे तो अच्छे हैं, बस खोखले ना निकल जाए। That is financial year 2026-27, I propose to increase it to 12.2 lakh crores to continue the momentum. To strengthen the confidence of private developers regarding risks during infrastructure development and construction phase, I propose to set up an infrastructure risk guarantee fund to provide prudentially calibrated partial credit guarantee to lenders. Infrastructure risk guarantee fund, oh my god. REITs have emerged as a successful instrument for asset monetization. I propose to accelerate recycling of significant real estate assets of the CPSEs through the setting up of dedicated REITs. अभी तक मार्केट के लिए सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। Environmentally sustainable movement of cargo, I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east. सुन लो इस पॉइंट को सुन लो। कार्गो का नया लाइन आने वाला है, तो सौदा किसको मिलने वाला है? कौन से डेवलपर को? ढूंढो। रेलवे का नया ट्रैक बनने वाला है, ठीक है, ढूंढो उनको। Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul and industrial centers like Kalinga Nagar to the ports of Paradeep and Dhamra. Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these waterways. This will benefit youth in the entire stretch of the waterways to train and acquire skills. Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. And C, launch a coastal cargo promotion scheme for incentivizing a modal shift from rail to road to increase the share of inland waterways and coastal shipping from 6% अभी तक जितना भी बजट बोला है इंडिया के लिए सारा अच्छा है। अब अगर आप सोचोगे टैक्स घट जाएगा, ऐसा तो मैंने तो पहले ही बता दिया, ये बजट हमको खुश करने के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए है। अभी तक बहुत अच्छा बजट है। I propose to give incentives to indigenize manufacturing of seaplanes. A seaplane VGF scheme will be also introduced to provide support for operations. Carbon capture, utilization and storage. Aligning with the roadmap launched in December 2025, the carbon capture, utilization and storage technologies at scale will achieve higher readiness and in end-use application
across 5 अरे बजट है, आरबीआई का रेट कट थोड़ी है कि बजट including स्पीच आएगा copper, मार्केट भाग steel, जाएगा। cement, ऐसा नहीं refineries होता है, and कॉल पुट ये chemicals. सब नहीं होता है, रिलैक्स। An ओवर outlay लॉन्ग of टर्म का गेन आ रहा है, 20,000 crore रिलैक्स। is proposed over the next 5 years for this purpose. City economic regions. Cities are India's engines of growth, innovation and opportunities. We shall now focus on tier 2, tier 3 cities and even 2 temporary मिनट रुक towns, जाइए, नहीं तो इस बार which कॉपीराइट need स्ट्राइक आ modern जाएगा। infrastructure and basic amenities. This budget aims to further amplify the potential of cities to deliver the economic power of agglomerations by mapping city economic regions based on their specific growth drivers. स्विगी किस खुशी में भाग रहा है, मैन्युफैक्चरिंग को सब्सिडी मिल रहा है, एमएसएमई छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स का चीजें का दाम अगर घटेगा तो स्विगी, मतलब समझ पा रहे हो, लॉन्ग टर्म को समझो, वो भी अपना कमीशन को थोड़ा घटा के सेल को बढ़ा पाएंगे। Financing mechanism. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. अपने शहर से डायरेक्ट वाराणसी का ट्रेन, अच्छा देखेंगे कब आएगा ये चीज। The Indian banking sector today is characterized by strong balance sheet, historic highs in profitability, improved asset quality, and coverage exceeding 98% of villages in the country. At this juncture, we are well placed to futuristically evaluate the measures needed to continue on the path of reform-led growth of this sector. I propose setting up a high-level committee on banking for Vikasit Bharat. High-level committee on banking for Vikasit Bharat to comprehensively review the sector and align it with India's next phase of growth while safeguarding financial stability, inclusion, and consumer protection. The vision for NBFCs for Vikasit Bharat has been outlined with clear targets for credit disbursement and technology adoption in order to achieve scale and improve efficiency in the public sector NBFCs. As a first step, it is proposed to restructure the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation. I propose a comprehensive review of the foreign exchange management non-debt instruments rules to create a more contemporary, user-friendly framework for foreign investments consistent with India's evolving economic priorities. Corporate bond market. I propose to introduce a market-making framework with suitable access to funds and derivatives on corporate bond indices. I also propose to introduce total return swaps on corporate bonds. Municipal bonds. To encourage the issuance of municipal bonds of higher value by larger cities, I propose an incentive of 100 crore rupees for a single bond issuance. मेटल का बहुत बुलिश व्यू है, अर्थ स्टील एंड मतलब मेटल्स के लिए अलग-अलग प्लान बनाया जा रहा है। More than 1,000 crore. The current scheme under Amrit. Single bond more than 1,000 crore है भगवान, what a liquidity it will provide. Which incentivizes issuances up to 200 crores only, will also continue to support smaller and medium towns. That will also continue to support the smaller and medium towns. Ease of doing business. Individual persons resident outside India, PROI, will be permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies through the portfolio investment scheme. बात याद रखिए, ये वाला बजट जो है ना,
to increase the investment limit for दिस इज नॉट अभी आया अब कल हो गया, इट्स अ लॉन्ग टर्म स्कीम। तो कोई स्टॉक अगर अच्छा भी लगता है ना, लेवल पे बाई कीजिए। ऐसा नहीं कि ये रेल लाइन बनेगा तो आरबीएनएल जाके कूद के ले लिया, कल को रेल लाइन नहीं बन रहा है, टाइम लगता है रेल लाइन को भी बनने में ठीक है। तो फाइंड अ गुड लेवल, उनके सब्सिडरीज को पकड़िए, उनके प्रॉक्सीज को पकड़िए, क्या क्या मेटल्स लगेगा उनको पकड़िए। ऐसा नहीं कि कल कोई बन जाएगा। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म बजट, ठीक है। तो रिलैक्स, काम डाउन। Technology is for the benefit of all people. Farmers in the field, women in STEM, youth keen to upskill, and Divyangjan to access newer opportunities. The government has I'm expecting a liquidity sweep after the budget to support new technologies through AI mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund, and Research and Development and Innovation Fund. Our second kartavya is to fulfill aspirations and build capacity. Close to 25 crore individuals have come out of multi-dimensional poverty through a decade of our government's sustained and reform-oriented efforts. देखना, ये रेयर मेटल जो है ना, मैं एक स्टॉक बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना। अर्थ स्टील एंड अलॉयज, इट्स अ पेनी स्टॉक, फोकस पे रखना इसको। To provide a pathway to fulfilling aspirations. कोई ट्रेड नहीं लेना आज। India with the following measures. मतलब इंट्राडे तो बिल्कुल भी नहीं, रिलैक्स, काम डाउन। I propose to set up a high-powered education to employment and enterprises standing committee to recommend measures that focus on services sector as a core driver of Viksit Bharat. This will make us a global leader in services with a 10% global share by 2047. The committee will prioritize areas to optimize the potential for growth, employment, and exports. They will also assess the impact of emerging technologies, including AI, on jobs and skill requirements and propose measures thereof. To create a range of skilled career pathways, a new range of skilled career pathways for our youth, I propose interventions in the following sectors. Health. Existing institutions for allied health professionals will be upgraded and new AHP institutions established in private and government sectors. This will cover 10 selected disciplines, including optometry, radiology, anesthesia, OT technology, applied psychology and behavioral health, and add 1 lakh AHPs over the next 5 years. ये चीज खराब हुआ, मैं लास्ट में बताऊंगा। हेल्थ का एक पॉइंट मुझे याद दिलाना प्लीज। Geriatric and allied care services will be built. A variety of NSQF aligned programs will be developed to train multi-skilled caregivers, combining core care and allied skills such as wellness, yoga, and operation of medical assistive devices. In the coming year, 1.5 lakh caregivers will be trained. Hubs for medical value tourism. To promote India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector. These hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational, and research facilities. They will have Ayush centers, medical value tourism facilitation centers, and infrastructure for diagnostics, post-care, and rehabilitation. These hubs will provide diverse opportunities, job opportunities for health professionals, including doctors and AHPs. Ancient Indian yoga, already respected in several parts of the world, was given a mass global recognition
when Honorable Prime Minister took it to the UN. Post-COVID, Ayurveda gained a similar global acceptance and recognition. Exporting quality Ayurveda products helps farmers who grow the herbs and youth who process the products. To meet growing global demand, a few more steps are being taken. I propose to 1. Set up 3 new All India Institutes of Ayurveda. 2. Upgrade Ayush pharmacies and drug testing labs for higher standards of आएगा डिफेंस भी आएगा. चलो आयुर्वेदा को लेके अब सीरियस हो रहा है गवर्नमेंट. More skilled personnel. 3. Upgrade the WHO Global Traditional Medicine Center in Jamnagar to bolster evidence-based research. अब एक टाइम आएगा देखना होम्योपैथी को लेके भी ये लोग सीरियस होंगे. इट्स मतलब सीरियस बिजनेस. एलोपैथी जो है ये फार्मा का जो लास्ट में एक मेडिकल का कुछ पॉइंट बताया दैट इज नॉट गुड इन द लॉन्ग टर्म. मैं बताऊंगा लास्ट में क्या हो रहा है एक्चुअल इंडस्ट्री में. Close to 16% of farm income, including of poor and marginal households. To scale up availability of veterinary professionals by more than 20,000, I propose to roll out a loan-linked capital subsidy support scheme for establishment of veterinary and para-veterinary colleges, veterinary hospitals, diagnostic laboratories, and breeding facilities in private sector. Collaboration between Indian and foreign institutions will also be facilitated. Orange economy. India's animation, visual effects, gaming and comics sector, AVGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. वो तो सीतारमन जी को पूछना पड़ेगा हिंदी में क्यों नहीं होती. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up AVGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. क्या बोल रहा है कंटेंट क्रिएशन का कोर्स. अरे The Indian design industry is expanding rapidly and yet there is a shortage of Indian designers. I propose to establish through challenge route a new National Institute of Design to boost design education and development in the eastern region of India. Education. Our government will support states through challenge route in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. These planned academic zones will host multiple universities, colleges and research institutions, skill centers and residential complexes. In higher education, STEM institutions, prolonged hours of study and laboratory work pose some challenges for girl students. Through VGF, viability gap funding and capital support, इतना वादा किया है ना, मतलब ये पूरा करते करते 2 टर्म ना लग जाए. एवरी डिस्ट्रिक्ट आप समझ पा रहे हो, एजुकेशन को लेके एवरी डिस्ट्रिक्ट बताया जा रहा है. बाप रे बाप. मतलब ठीक है, बहुत अच्छा है, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट इम्प्लीमेंटेशन होते होते इट विल बी केओस. एजुकेशन 100 साल पहले जो था अभी भी वही है. लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड गेट रेडी फॉर द वर्स्ट. 4 telescope infrastructure facilities will be set up or upgraded. The National Large Solar Telescope, the National Large Optical Infrared Telescope, the Himalayan Chandra Telescope, and the Cosmos 2 Planetarium. Tourism. The tourism sector has the potential to play a large role in the employment generation, वही बोल रहा हूँ. इतना forex earnings, and अच्छा तो दिया है expanding बजट, local economy. बट I propose to set up a National Institute of Hospitality. देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी. National Council for Holiday. इतना काउंसिल, इतना सारा वादा है ना, मतलब पूरा करते करते बहुत अच्छा है. वेल हो गया तो माइंड बॉबलिंग. अब समझ पा रहे हो, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कंटेंट क्रिएशन के चीजों को इम्प्लीमेंट करना कितना टाइम टेकिंग है. लेट्स सी.
in 20 iconic tourist sites through a standardized ये सिविक सेंस सुधारने के लिए एक लॉ चाहिए, ये पर्याप्त training course in hybrid mode in collaboration with a Indian Institute of Management. A national destination digital knowledge grid will be established to digitally document all places of significance, cultural, spiritual, and heritage. This initiative will create a new ecosystem of jobs for local researchers, historians, content creators, and technology partners. India has the potential and opportunity to offer world-class trekking and hiking experience. We will develop ecologically sustainable mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Jammu. इधर मैं देख रहा हूँ मुंबई में वो अपना नया एक फ्लाईओवर आया है, ऐसे बीच में से मोड़ दिया, और इस तरह का चीजें इंप्लीमेंट हो पाएगा यार? मतलब अब समझ पा रहे हो कितना क्या क्या बोल रहे हैं, बाप रे बाप। 10,000 गाइड्स का ट्रेनिंग, हेरिटेज साइट्स पे कंटेंट क्रिएशंस को अलाउ करना। 3 bird watching trails along the Pulicat Lake in Andhra Pradesh, Tamil Nadu. It's on the border. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, we established the International Big Cat Alliance in 2024. This year, India is hosting the first ever Global Big Cat Summit, where heads of governments and ministers ये क्या हो रहा है ना, अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है, 95 range countries मतलब ये कुछ ज्यादा ही वादे हो रहे हैं on collective strategies for conservation. Heritage and culture tourism. I propose to develop 15 archaeological sites, including Lothal, Dolavira, Rakhi Gadi, Adichanallur, Sarnath, Hastinapur, and Leh Palace into vibrant experiential cultural destinations. Excavated landscapes will be open to the public through curated walkways. Immersive storytelling skills and technologies will be introduced to help conservation labs, interpretation centers, and guides. इससे अच्छा तो हिमाचल में कोई नया डैम वगैरह बना देते, इतना फ्लड होता है हर साल। क्या है ये बर्ड वॉच सेंचुरी? Taking forward the systematic nurturing of sports talent which is set in motion through the Khelo India program earlier, I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. अरे हे हमारा स्पोर्ट्स सेक्टर अच्छा, और क्या ट्रांसफॉर्म होगा? खेलो इंडिया, खेल रहा है तो इंडिया। Talent development pathways supported by training centers which are foundational, intermediate, and elite levels. B. Systematic development of coaches and support staff. C. Integration of sports science and technology. D. Competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E. Development of sports infrastructure for training and competition. Our third Kartavya aligns with our vision of Sabka Saath Sabka Vikas towards Vikasit Bharat. This requires targeted efforts mother of all budget. increasing farmer incomes through productivity enhancement and entrepreneurship, with special attention to small and marginal farmers. B. Empowering Divyangjan through access to livelihood opportunities, training, and high-quality assistive devices. C. Empowering the vulnerable to access mental health and trauma care. D. Focus on the Purvodaya states and the Northeast region to accelerate development and employment opportunities. Fisheries. We will undertake initiatives for integrated development of 500 reservoirs. स्पोर्ट्स में डेवलपमेंट है, करप्शन बहुत ज्यादा है, समझिए चीजों को। स्पोर्ट्स इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन करप्शन ज्यादा है, वहां पे भी है, यू ऑल्सो नो दैट। Producer organization.
इतना अच्छा वादा हुआ है ना कि अगर ये पूरा हो गया तो इंडिया चाइना बन जाएगा, मतलब चाइना से भी बेटर बन जाएगा पूरा चीजों में। अब समझ पा रहे हो? मेंटल एंड ट्रॉमा हेल्थ केयर, डिप्रेशन इज नॉर्मलाइज्ड, रैशनलाइज्ड, एवरीथिंग इज अप टू पिन पॉइंट, सिविलाइजेशन जंप हो जाएगा। इतना करना 2 टर्म 3 टर्म लग जाएंगे, 4 टर्म पे भी ना हो पाए शायद। Stock, dairy and poultry I'll read that again. Enhance creation of livestock, dairy and poultry focused integrated value chains. And D, encourage creation of livestock farmer producer organizations. High value agriculture. To diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes, and create new employment opportunities, we will support high-value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas, agar trees in northeast, and nuts such as almonds, walnuts, and pine nuts in our hilly regions. All of them will be supported. India is the world's largest producer of coconuts. About 30 million people, including nearly 10 million farmers, depend on coconuts for their livelihood. To further enhance competitiveness in coconut production, I propose a coconut promotion scheme to increase production and enhance productivity through various interventions, including first half of the budget बहुत अच्छा था। अब ना थोड़ा अपन को भी डर लग रहा है कि इतना कर लेगा। or plants or varieties in major coconut growing states. A dedicated program is proposed for Indian cashew and cocoa to make India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing, enhance export competitiveness, and transform Indian cashew and Indian cocoa into premium global brands by 2030. Sandalwood is closely linked to India's social and cultural heritage. Our government will partner with state governments to promote focused cultivation and post-harvest processing to restore the glory of the Indian sandalwood ecosystem, to rejuvenate old, low-yielding orchards and expand high-density cultivation of walnuts, almonds, and pine nuts. We will support a dedicated program to enhance farmer incomes and in bringing value addition by engaging youth. Bharat Vistar, that is virtually integrated system to access agricultural resources. I propose to launch Bharat Vistar, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals and the ICAR package on agricultural. इस बजट में मिडिल क्लास के लिए कोई फायदा नहीं, भूल जाओ कुछ नहीं है। ये एक फैंसी बजट है जिसमें स्टॉक्स में पुश आ सकता है। मैंने क्या बताया था कि दुनिया को दिखाना है इंडिया इज ग्रोइंग ताकि इनफ्लो आए। दुनिया को दिखाया जाएगा, बॉन्ड मार्केट को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, रेटिंग एजेंसी को दिखाया जाएगा इंडिया इज द बेस्ट। ये एक अलग टाइप का स्ट्रेटजी है। डोंट वरी, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है इधर। I propose to help women take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur, marts will be set up as community-owned retail outlets within the cluster-level federations through enhanced and innovative financing instruments. Empowering Divyangjan. Divyangjan Kaushal Yojana. Information technology, AVGC sectors, hospitality and food and beverages sectors often offer task-oriented and process-driven roles which are suitable for Divyangjan. We will ensure dignified livelihood opportunities through industry-relevant and customized training specific to each Divyangjan group. Divyang Sahara Yojana. Timely access to high-quality assistive devices
for all eligible Divyangjan is a fundamental need. I propose to 1. Support the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, ALIMCO, to set up and to scale up production of assistive devices, invest in R&D and AI integration, strengthen PM Divyasha Kendras, and support setting up of assistive technology marts as modern retail style centers where Divyangjan and senior citizens can see, try and purchase assistive products. Reaffirming our commitment to mental health and trauma care. There are no national institutes for mental health care in North India. We will therefore set up a NIMHANS 2 and also upgrade national mental health institutes in Ranchi and in Tezpur as regional apex institutions. Emergencies expose families, particularly the poor and vulnerable, to unexpected expenditure. We will strengthen and increase these capacities by... थोड़ा सा रुक जाइए, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा फास्टर स्टीम लगाता हूँ, मैं भूल गया पीआईबी इंडिया तो है ही, यस, एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाइए. Purvoday. I propose the development of an integrated East Coast Industrial Corridor with a well-connected node at Durga. Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram and Tripura. The scheme will cover preservation of temples and monasteries, pilgrimage interpretation centers, connectivity and pilgrim amenities. 16th Finance Commission. On 17th November 2025, the 16th Finance Commission submitted its report to the President. As mandated under Article 281 of the Constitution, the government is to lay the report along with the explanatory memorandum on the action taken report on the recommendations of the Commission in Parliament, which, Sir, Honourable Speaker, you've allowed me to do at the commencement of this session. The government has accepted the recommendation of the Commission to retain the vertical share of devolution at 41%. As recommended by the Commission, I have provided 1.4 lakh crores of rupees to the states for the year 2026-2027 as Finance Commission grants. These include rural and urban local body. क्या होगा 8 पे कमीशन आएगा, उसमें भी देखना कितना कम आता है, इतना fiscal consolidation. बंगाल में Government दिक्कत has है been यार. delivering on our fiscal commitments consistently without compromising on social needs. To strive towards accepted standards of fiscal management in Budget 25-26, I had indicated that the central government would target reaching a debt to GDP ratio of 50 plus or minus 1% by 2030-31. In line with this, the debt to GDP ratio is estimated to be 55.6% of GDP in BE 26-27, compared to 56.1% of GDP in RE 25-26. A declining... क्या हो गया ये फास्ट के चक्कर में यहाँ पे management in budget 2025-26. A declining... क्या हो गया बजट को? A declining...
fulfilled my commitment made in 2021-2022 to reduce fiscal deficit below 4.5% of GDP by 25-26. In RE 25-26, the fiscal deficit has been estimated at par with BE of 2025-26 at 4.4% of GDP. In line with the new fiscal prudence path of debt consolidation, the fiscal deficit in BE 26-27 is estimated to be 4.3% of the GDP. The revised estimates of the non-debt receipts are 34 lakh crore rupees, of which the centre's net tax receipts are 26.7 lakh crore. The revised estimate of the total expenditure is 49.6 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 11 lakh crores. Budget estimates 2026 to 2027. Coming to 26-27, the non-debt receipts and the total expenditure are estimated as 36.5 lakh crore and 53.5 lakh crore respectively. The centre's net tax receipts are estimated at 28.7 lakh crore rupees. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.7 lakh crore rupees. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 17.2 lakh crore rupees. I'll now move to Part B. Part B. पार्ट ए बाप रे बाप, देखते पार्ट बी में क्या आता है. Honorable Speaker, sir, I now present my proposals on direct taxes. New Income Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. ओम बिरला जी बीजेपी के स्पीच में हंसते ही रहते हैं. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount. वही टूरिज्म पे ज्यादा फोकस है, हेरिटेज साइट I टूरिज्म. ठीक propose है. to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the Liberalized Remittance Scheme, popularly known as LRS, from 5% to 2%. Supply of manpower services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment to contractors for the purpose of TDS to avoid ambiguity. Thus, TDS on these services will be at the rate of either 1% or 2% only. I propose a scheme for small taxpayers, wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer. For the ease of taxpayer holding securities in multiple companies, I propose to enable depositories to accept Form 15G or Form 15H from the investor and provide it directly to various relevant companies.
I propose to extend time available for revising returns from 31st December to up to 31st March with the payment of a nominal fee. I also propose to stagger the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till 31st July, and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time till 31st August. TDS on sale of immovable property by a non-resident is proposed to be deducted and deposited through resident buyers and his or her PAN-based challan instead of requiring a TAN, which is a temporary accounting number. To address practical issues of small taxpayers like students, young professionals, tech employees, relocated NRIs, and such others, I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose income or assets below a certain size. This scheme would be applicable for two categories of taxpayers, namely A, who did not disclose their overseas income or assets, and B, who disclosed their overseas income and or paid due tax but could not declare the asset acquired. For category A, the limit of undisclosed income or asset is proposed to be up to 1 crore rupees. They need to pay 30% of fair market value of asset or 30% of undisclosed income as tax and 30% as additional income tax in lieu of penalty, and would thereby get immunity from prosecution. For category B, asset value is proposed to be up to 5 crore rupees. Here, immunity from both penalty and prosecution will be available with a payment of fee of 1 lakh rupees. Penalty and prosecution. Multiplicity of proceedings are hindrance to the ease of doing business. I propose to integrate assessment and penalty proceedings by way of a common order for both. There will be no interest liability on the taxpayer on the penalty amount for the period of appeal before the first appellate authority, irrespective of the outcome of appeal process. वो एक मीम था ना, एक ऐसे नाच रहा है दुनिया खत्म होने वाला है, वो वाला याद आ रहा है. Repayment is being reduced from 20% to 10% and will continue to be calculated only on core tax demand. As an additional measure for reducing litigation, I propose to allow taxpayers to update their returns even after reassessment proceedings have been initiated, and an additional 10% tax rate over and above the rate applicable for the relevant year. The assessing officer will then use only this updated return in his proceedings. There is already a framework for immunity from penalty and prosecution in the cases of underreporting. I propose to apply this framework for immunity to misreporting too. However, in such a case, the taxpayer will need to pay 100% of the tax amount as an additional income tax over and above the tax and interest due. Penalties for certain technical defaults, such as failure to get accounts audited, non-furnishing of transfer pricing audit report, and default in furnishing statement for financial transactions are proposed to be converted into fee. I propose to rationalize prosecution under Income Tax Act while maintaining a careful balance for deterrence in some serious offense. Non-production of books of account and documents and requirement of TDS payment where payment is made in kind are being decriminalized. Further, minor offenses will attract fine only. The remaining prosecutions will be graded commensurate with the quantum of offense. They will entail only simple imprisonment
with maximum imprisonment reduced to 2 years and power to courts to convert even those into fines. There is no penalty. There's no penalty presently for non-disclosure of non-immovable foreign assets with aggregate value less than 20 lakh rupees. I propose to also provide them with immunity from prosecution with retrospective effect from 1/10/2024. इमूवेबल एसेट में क्रिप्टो नहीं आता है, ठीक है, समझो। फॉरेन में एक घर है 20 लाख के नीचे कैसे होगा? 2-2.5 करोड़ का तो होगा ही होगा, उसको अब डिस्क्लोज करना है। Deduction is already allowed to a primary cooperative society engaged in supplying milk, oil seeds, fruits or vegetables raised or grown by its members. I propose to extend this deduction to also include supply of cattle feed and cotton seed produced by its members. I propose to allow inter-cooperative society dividend income as deduction under the new tax regime to the extent it is further distributed to its members. I further propose to allow exemption for a period of 3 years to dividend income received by a notified national cooperative federation on their investments made in companies up to 31/1/2026. This exemption would be allowed only for dividends further distributed to its member cooperatives. Supporting IT sector as India's growth engine. India is a global leader in software development services, IT-enabled services, knowledge process outsourcing services, and contract R&D services relating to software development. These businesses and their segments are quite interconnected with each other. All these services are proposed to be clubbed under a single category of information technology services with a common safe harbor margin of 15.5% applicable to all. The threshold for availing safe harbor for IT services is being enhanced substantially from 300 crore rupees to 2,000 crore rupees. Safe harbor for IT services shall be approved by an automated rule-driven process without any need for tax officer to examine and accept the application. Once applied by an IT services company, the same safe harbor can be continued for a period of 5 years at a stretch at its choice. For IT services companies who want to conclude advanced pricing agreement, APA, I propose to fast-track unilateral APA process for IT services and endeavor to conclude it within a period of 2 years. The period of 2 years can be extended by a further period of 6 months on taxpayers' request. I propose to extend the facility of modified returns available to the entity entering APA to its associated entities also. Attracting global business and investment. Recognizing the need to enable critical infrastructure and boost investment in data centers, I propose to provide tax holiday till 2047 to any foreign company that provides cloud services to customers globally by using data center services from India. It will, however, need to provide services to Indian customers through an Indian reseller entity. I also propose to provide a safe harbor of 15% on cost in case the company providing data center services from India is a related entity. To harness the efficiency of just-in-time logistics for electronic manufacturing, I propose to provide safe harbor to non-residents for component warehousing in a bonded warehouse at a profit margin of 2% of the invoice value. The resultant tax of about 0.7% will be much lower than in competing jurisdictions. To provide fillip to toll manufacturing in India, I propose to provide exemption from income tax for 5 years
to any non-resident who provides capital goods, equipment, or tooling to any toll manufacturer in a bonded zone. To encourage vast pool of global talent to work in India for a longer period of time, I propose to provide exemption to global, non-India sourced income of a non-resident expert for a stay period of 5 years under notified schemes. I propose to provide exemption from minimum alternate tax, the MAT, to all non-residents who pay tax on presumptive basis. Tax administration. I propose to constitute a joint committee of Ministry of Corporate Affairs and Central Board of Direct Taxes for incorporating the requirements of income computation and disclosure standards, the ICDS, in the Indian Accounting Standards Ind AS itself. Separate accounting requirement based on ICDS will be done away with from the tax year 27-28. To support Prime Minister Modi's vision of homegrown accounting and advisory firms to become global leaders, I propose to rationalize the definition of accountant for the purposes of safe harbor rules. Other tax proposals. Change in taxation of buyback was brought in to address the improper use of buyback route by promoters. In the interest of minority shareholders, I propose to tax buyback for all types of shareholders as capital gains. However, to disincentivize misuse of tax arbitrage, promoters will pay an additional buyback tax. This will make effective tax 22% for corporate promoters. For non-corporate promoters, the effective tax will be 30%. TCS rate for sellers of specific goods, namely alcohol, scrap, and buyback पे tax लगा दिया corporate sector पे 2%, and that on needs will be reduced from 5% to 2%. I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. We reformed the taxation landscape for corporates in 2019 by providing them a simplified regime with lower tax rate so that they could productively focus on business rather than on claim of deductions and exemptions. To encourage companies to shift to the new regime, set off of brought forward MAT credit, minimum alternate tax credit, is proposed to be allowed to companies only in the new regime. Set off using available MAT credit is proposed to be allowed to an extent of 1/4 अब इसको क्या हो गया? Available MAT credit is proposed to be allowed to an extent of 1/4 बजट रुक क्यों जा रहा है? आप लोगों का रुक रहा है क्या? मेरा ही रुक रहा है सिर्फ से. The rate of final tax is being reduced to 14% from the current MAT rate of 15%. The brought forward MAT credit of taxpayers accumulated till 30th March 2026 will continue to be available to them for set off as above. Indirect taxes. I shall now take up proposals related to indirect taxes. My proposals for customs and central excise aim to further simplify the tariff structure, support domestic manufacturing, promote export competitiveness, and correct inversion in duty.
To continue weeding out long continuing customs duty exemptions, I propose to remove certain exemptions on items which are being manufactured in India or where the imports are negligible. Similarly, to further simplify the process of ascertaining the rate of duty applicable on a particular item, I propose to incorporate certain effective rates in various customs notifications to the tariff schedule itself. I shall now take up sector-specific proposals. Promotion of exports of marine, leather and textile products. I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafoods for export from the current 1% to 3% of FOB value of the previous year's export turnover. I also propose to allow duty-free imports of specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic footwear, to exports of shoe uppers as well. I propose to extend the time period for export of final product from ये the एक existing एसटीटी 6 और बाईबैक months को to बनाने 1 के year चक्कर में बीएससी का स्टॉक for देखो क्या हो रहा exporters of है। leather अजीब or आदमी है यार। textile garments, leather or synthetic बैल footwear मुझे मार। and other leather products. Energy transition and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also. I propose to exempt basic customs duty on import of sodium antimonate for use in manufacture of solar glass. सब ठीक है, लेकिन कभी सुना है बाईबैक पे टैक्स 22% कॉर्पोरेट पे, नॉन प्रोमोटर पे? अरे भगवान, customs duty मैनिपुलेशन कैसे होगा? मैनिपुलेशन नहीं होगा तो खेल कैसे होगा? ये तो ऐसा हो गया कि करप्शन नहीं तो कुछ नहीं बचेगा ना। वी हैव टू अंडरस्टैंड द मैनिपुलेशन। expanded for all nuclear plants irrespective of their capacity. मुझे भी यही लगता है, मार्केट से दूर रखना चाहता है क्या? अच्छा खासा मार्केट है यार। It is proposed to provide basic customs duty exemption. अभी इसको ये बोलना है, एनएससी का आईपीओ आने वाला है। Required for the processing of critical minerals in India. Biogas blended CNG. I propose to exclude the entire value of biogas while calculating the central excise duty payable on biogas blended CNG. Civil and defense aviation. I propose to exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. अरे ये पैसा फंसा देगा मेरा। To exempt basic customs duty on raw materials imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair or overall requirements by units in the defense sector. Electronics. To deepen value addition in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens. Special economic zone. To address the concerns arising about utilization of capacity by manufacturing units in the special economic zones due to global trade disruptions, I propose as a special one-time measure to facilitate sales by eligible manufacturing units in SEZs to the domestic tariff area at concessional rates of duty. The quantity of such sales will be limited to a prescribed proportion of their exports. Necessary regulatory changes will be undertaken to operationalize the measures while ensuring level playing field for the units working in the DTA. Ease of living. To rationalize the customs duty structure for goods imported for personal use, I propose to reduce the tariff rate सिर्फ एसटीटी नहीं, बाईबैक पे टैक्स लगा दिया ना, एसटीटी तो भरा ही भरा है। imported for personal use from 20% to 10%.
To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines, and food for special medical purposes used in their treatment. Customs process. India's role and share in the global trade is poised for a major leap in line with our ambition and journey towards Vikasit Bharat. In this regard, I propose many measures for custom processes to have minimal intervention for smoother and faster movement of goods and greater certainty to the trade. Trust-based systems. I propose to enhance duty deferral period for Tier 2 and Tier 3 authorized economic operators, no AEOs, from 15 days to 30 days. I propose कोई 1145 वाला स्ट्रेटजी यूज किए हो? अगर किए हो तो the same duty deferral facility. This should encourage them to get themselves accredited as a full बजट के दिन ICYC नहीं बनता है, वो अलग खेल हो जाएगा, ठीक है? 1145 वाला स्ट्रेटजी यूज किए हो ना, बजट वाला? 1145 के बाद डे हाई या डे लो, जिस साइड भी ब्रेक होगा उस साइड का मूवमेंट. Binding on customs from the present 3 years to 5 years. In the spirit of the whole of government approach, मैं ट्रेड नहीं कर रहा था, मैं भूल गया था 1145. आपके सामने बैठा था मैं मेरा फोकस किसी और चीज पे था. Government agencies will be encouraged to leverage AEO accreditation for preferential treatment in clearing their cargo. Regular importers with trusted long-standing supply chains will be recognized in the risk system so that the need for verification of their cargo every time can be minimized. Export cargo using electronic sealing. Export cargo using electronic sealing will be provided through clearance from the factory premises to the ship. For import of goods not needing any compliance, filing of bill of entry by a trusted importer and arrival of goods will automatically notify customs for completing their clearance formalities. This will enable goods to be released immediately on arrival. The customs warehouse framework will be transformed into a warehouse operator-centric system with a self-declarations, electronic tracking, and risk-based audit. These reforms will move away from the current system of officer-dependent approvals and reduce transaction delays and compliance costs. Ease of doing business. Approvals required for cargo clearance from various government agencies will be seamlessly processed through a single and interconnected digital window by the end of the financial year. Processes involved in clearance of food, drugs, plant, and animal and wildlife products, accounting for about 70% of interdicted cargo, will be operationalized on this system by April 2026 itself. For goods not having any compliance requirement, clearance will be done by customs immediately after online registration is completed by the importer, subject to the payment of duty. Customs integrated system will be rolled out in 2 years as a single integrated and कोर्स का मटेरियल नहीं है, वो सिर्फ बजट स्पेशल है. दोनों ही है, 1215 भी है, 1145 भी है. 1145 शायद शेयर नहीं किया मैंने, इतना कुछ बताया ना, भूल के जाता हूँ क्या बताया क्या नहीं बताया. AI technology for risk assessment will be expanded in a phased manner with the objective to scan every container across all the major ports. New export opportunities to support Indian fishermen to fully harness the economic value of marine resources beyond our territorial waters. The following measures will be taken. A. Fish catch by an Indian fishing vessel in exclusive economic zone
or on the high seas will be made free of duty. Landing of such fish on foreign port will be treated as export of goods. Safeguards will be put in place to prevent misuse during fish catch, transit, or transshipment. To support aspirations of India's small businesses, artisans, and startups to access global markets through e-commerce, I am pleased to announce complete removal of the current value cap of 10 lakh rupees per consignment on courier exports. In addition, handling of rejected and returned consignments will be improved with effective use of technology for identifying such consignments. I propose to revise provisions governing baggage clearance during international travel to address genuine concerns of passengers. The revised rules will enhance मैं समझ रहा हूँ ये बजट किसका है, मिडिल क्लास को मारा, ऊंचे लोग को भी मारा, लोअर क्लास को भी मारा, फिर कुछ को थोड़ा थोड़ा दाना दे रहा है. Brought in or taken out. There are honest taxpayers who are willing to settle disputes by paying all their dues, but they get deterred due to negative connotation. बस इस बार बजट MSMEs के लिए बहुत बढ़िया है, माइक्रो एंड स्मॉल कंपनीज के लिए. एक्सपोर्ट में 10 लाख पर कंटेनर चाहिए था, अभी वो कैपिंग भी हटा दिया, 2 लाख में कंटेनर भेज सकते हो. Honorable Speaker, sir, with this I commend the budget to this august house. Jai Hind. जय हिंद, जय भारत. उफ, चलो डिस्कस करते हैं बजट का सारा पॉइंट्स. 1.5 hours. आइटम नंबर 3, माननीय वित्त मंत्री जी. Okay, 1.5 hours of that speech. हाँ जी, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? बताइए. क्या समझे, बोलिए. डिफेंस के ऊपर बात नहीं किया तो डिफेंस को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. आइटम नंबर, जरा एक्सप्लेन कर दो. क्या हाल चाल. देखो, चीजों को समझो. सारा चीजें ठीक ठाक था. एसटीटी बढ़ाने की बात किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. जब मार्केट यहां से कवर कर रहा था ना, तब एक अच्छा न्यूज दिया था. क्या न्यूज दिया? जितने भी बाहर के कंपनीज है जो डाटा प्रोवाइड करते हैं, डाटा इन द सेंस ऑफ आप मान के चलो इंटेलिजेंट डाटा हो गया, एआई ड्रिवन डाटा हो गया, साथ ही साथ क्लाउड सर्वर्स हो गए, जैसे AWS आ गया. अगर आप स्टार्टअप करते हो तो आपको पता होगा AWS है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का है, गूगल का है, बहुत सारा है, ठीक है, होस्टिंगर जैसे बहुत सारा है जो क्लाउड सर्वर प्रोवाइड करते हैं. वो अगर इंडियन कंपनीज को, इंडियन स्टार्टअप्स को प्रोवाइड करते हैं, जो भी प्लान्स आएगा, जो भी उनको मतलब इंडिया से कमाई आएगा, वो बिल्कुल टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा टिल 2047. इट इज ए ह्यूज न्यूज, ह्यूज न्यूज. क्योंकि फिर क्या होगा ना, अब स्टार्टअप पे फोकस आएगा, उसके साथ साथ जो भी, जैसे अगर आप AWS चलाओगे, एक नॉर्मल 10,000 लोगों का क्लाइंट सर्वर आपका होगा, तो महीने का 60-70 हज़ार कुछ भी नहीं है. तो वहां पे क्या होगा ना, वो लोग अब प्राइस घटाएंगे ताकि इंडियन पीपल और ज्यादा ले. तो ये एक अच्छा न्यूज था. यहां पे मार्केट में थोड़ा पुश आया, क्या, क्योंकि ये एक ओवरऑल इकोनॉमी में मजेदार चीजें आ सकता है, ठीक है. माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया, बिल्कुल. हाँ, इंडिया में सर्वर क्रिएट होना चाहिए. और एक चीज मैं बोलना भूल गया, वो रीसेलर होना चाहिए. मतलब AWS सर्वर को इंडियन कंपनी रीसेल करेगा. इससे ना आईटी में जान आ जाएगा. कोई एक नया कंपनी बना देगा और वो फिर AWS से सर्वर खरीद के फिर हमारे यहाँ पे सेल करेगा. तो इट इज अ वेरी गुड न्यूज. और चेन सिस्टम में अच्छा चल रहा था. अचानक से 12:11 पे आप देख लेना, ये स्ट्रीम को पीछे करके मेरा दिमाग पे हाथ आ गया. पता है क्या न्यूज दिया? आप ये ऊपर टाइम दिख रहा है ना आपको, अराउंड 12:28. आप जब ये स्ट्रीम खत्म हो तो आप 12:10 पे जाके देखना. जब वो अनाउंस किया, मेरे दिमाग में हाथ आ गया. क्या बोला? कंपनी जो बाईबैक करते हैं, बाईबैक थे ना, अदानी ने बाईबैक किया. कोई भी कंपनी जो बाईबैक करते हैं, जो नॉन प्रोमोटर्स हो गया या फिर जो पब्लिक से शेयर्स को बाईबैक करते हैं, उस पे 22% या 21%, याद नहीं आ रहा कितना वाला, 21 या 22% का टैक्स लगा दिया. कैन यू इवन इमेजिन व्हाट द हेल इज दिस? आप समझ पा रहे हो क्या चीज है ये? अभी उनका कहना है, FM मिनिस्टर जी सीतारमन जी का कहना है कि
मैनिपुलेशन घटेगा, बिल्कुल मैनिपुलेशन घटेगा, बिल्कुल घटेगा मैनिपुलेशन, क्यों नहीं घटेगा? अब ये पंप एंड डंप थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब क्या है, बाईबैक कब होता है कि कंपनी का प्रोमोटर ने कंपनी को पुश किया, पुश करके कोई न्यूज फैलाया, न्यूज फैला के मार्केट को नीचे ला दिया, अब फिर उस शेयर को बाईबैक कर लिया, ये मैनिपुलेशन है। अब ये खत्म हो जाएगा, तो अगर खत्म हो जाएगा तो लिक्विडिटी तो नहीं रहेगा ना, ये समझने की बात है। मैनिपुलेशन, करप्शन हर जगह पे है। अगर हम कंपटीशन को ही हटा देंगे तो कैसे होगा? चोर के चोरी के डर से हम क्या मतलब घर में कुछ नहीं रखते क्या? सीधी बात है, मैनिपुलेशन को सीखना है, एडुकेट कीजिए ना। व्हाई यू आर ओमिटिंग द कंपटीशन? ये क्या कैंडल है? 317 पॉइंट का कैंडल, विक्स कितने में है? 15 होगा ही ना। ये बाईबैक के ऊपर टैक्स लगा दिया, ये कोई बात हुआ? कंपनीज खेलेंगे कैसे? बाहर में जो बैठे दुबई में, ठीक है, सिंगापुर में, केपी, जितने भी बैठे वो लोग मैनिपुलेट कैसे करेंगे इंडियन मार्केट को? अब आप बोलोगे इंडियन मार्केट को मैनिपुलेशन के बिना ही तो अच्छा है। मैनिपुलेशन के बिना मार्केट आपको देखना है क्या होने वाला है। रिटेलर के हाथ पे मार्केट जब आएगा ना, तब ये वाला मार्केट आ जाएगा। जब कुछ नहीं है मार्केट में, तब ये करना दिन का मतलब 8 पॉइंट, दिन का 3 पॉइंट, 21 पॉइंट, 50 पॉइंट के रेंज में 2015-16 का मार्केट जाके देखो क्या है, नहीं है। अच्छा लगेगा तब? ऐसे तो होना ही है। बाईबैक पे कोई ऐसा लगाता है क्या? हे भगवान, 22%, वही 22%। तो ये बहुत ही डेंजरस न्यूज है, जो मार्केट को अब लिक्विडिटी ग्रैब कराएगा, क्योंकि मैनिपुलेशन कम हो चुका है। मैं अभी भी समझ नहीं पाता हूं कि अगर कंपटीशन, मतलब ये तो ऐसा हो गया ना कि यूपीएससी में बहुत हार्ड है तो क्वेश्चन पेपर इजी कर दो, क्या होगा फिर? भीड़ के भीड़ आ जाएगा। तो देयर इज ऑलवेज समथिंग चैलेंजिंग अबाउट एवरीथिंग। तो वी शुड एडुकेट अवरसेल्फ। मैनिपुलेशन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मार्केट में जान नहीं रहेगा तो हम जैसे ट्रेडर्स को प्रॉब्लम होने वाला है। और ये बोल के क्या फायदा हो गया? ये हाँ, जितना भी पोर्टफोलियो में मतलब जितने भी एक्सपोर्ट वाले स्टॉक्स, उनका क्या हाल है मैं देख लेता हूं एक बार। ओह हो लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, क्या बोलूं, इतना गुस्सा आ रहा है मेरे को। मतलब पहले बैंक निफ्टी को उड़ाया, लॉट साइज के साथ खिलवाड़ किया, एसटीटी को बढ़ाया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को बढ़ाया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बढ़ाया, इंडेक्सेशन पे प्रॉब्लम कर दिया, ठीक है। उसके साथ साथ इस बार फिर से एसटीटी बढ़ा दिया, बाईबैक पे टैक्स लगा दिया, एनआरआई जो बचे हुए थे, जो पैसा लाते थे, उनको भी टैक्स लगा दिया। क्या टैक्स लगा दिया एनआरआई पे? बजट का पार्ट भी इतना घटिया है, टैक्सेशन वाला पार्ट। एनआरआई पे क्या बजट का टैक्स लगाया कि अगर आपका इमूवेबल एसेट है, इमूवेबल एसेट मतलब लैंड हो गया, जो मूव नहीं होता है, लैंड हो गया, हाउस हो गया, जो भी होता है, ठीक है, अगर इमूवेबल एसेट है फॉरेन कंट्री में, तो वो अगर 20 लाख के नीचे है तो आपसे टैक्स से एग्जेम्प्ट हो। अब फॉरेन कंट्री में 20 लाख के नीचे का कोई एसेट बचता है क्या? कहां? मतलब अफ्रीका में लेके रखा है क्या? उगांडा में है किसी का एसेट? अरे कोई उगांडा में एसेट लेगा क्या? अजीब बात है यार। बांग्लादेश का बात अलग है, तो कई का एसेट हो 20 लाख के ऊपर ही होगा। अच्छा ठीक है, वो अगर 3 साल के अंदर, वो अगर लास्ट 3 साल में उसको डिस्क्लोज नहीं किया तो उस पर 100% पेनल्टी विद टैक्स लगने वाला है। कैन यू इवन इमेजिन? और पेनल्टी टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, और 30% तो वैसे ही लगने वाला है। और जो 3-4 साल में डिस्क्लोज कर चुके 3-4, उनको 30% तक रोक देगा। तो कोई मुझसे वहां पे पूछ रहा था कि ये क्या, ये अदानी जी के ऊपर भी वो होगा? अगर नहीं भी हुआ ना, तो 3 साल का अभी ये बजट खत्म हुआ और उनका फाइल रेडी हो गया, डिक्लेरेशन हो भी गया, ऊपर से साइन भी आ जाएगा। तो डोंट कंपेयर आवरसेल्फ विद देम, ठीक है। मतलब ये हो गया कि चींटी को हाथी के साथ कंपैरिजन करना। 1000 चींटी मिलके भी हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप बोलोगे 1 करोड़ चींटी आएगा, हाथी पैर मारेगा ना, वो सबके सब खत्म ही होने वाले। तो वही बात है, ठीक है। ये समझ की रेड शर्ट, देखो रेड शर्ट में सच में वैसे नहीं, आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ लिक्विडिटी ग्रैब, बट नॉर्मल लिक्विडिटी ग्रैब, न्यूज की वजह से नहीं कि मार्केट नॉर्मल हो उसके बाद ये वाला फॉल हो। ये न्यूज बेस्ड हो गया ना, तो यहाँ पे दिक्कत है, यही फॉल अगर नॉर्मल होता और वो बाईबैक वाला न्यूज नहीं आता तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता। बट अभी ये बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, अभी ये कॉशियस जोन है, ठीक है। उसके साथ साथ मैं तब बोल रहा था याद दिलाने को हेल्थ केयर वाला चीज में क्या हुआ, दोज हु आर इन द हेल्थ इंडस्ट्री, वो उनको पता है। मेरा मतलब रिलेटिव्स का है, तो आई कैन रिलेट विथ इट। अभी ना जिनको डायबिटीज है उनको पता होगा, इंसुलिन का ना Gen 5 आया है। व्हाट इज Gen 5 ऑफ इंसुलिन? जो कैटरिज होता है ना, Gen 4 तक कैटरिज को बदला के जाया जा सकता था, सिर्फ 300 रुपए देगा आप कैटरिज बदल सकते थे। अभी क्या हो जाएगा ना, वो बिल्कुल डिस्पोजेबल है, मतलब उसमें कुछ बदलाया नहीं जा सकता। तो एक कैटरिज का दाम 1200-1400 रुपए।
और जेन 5 को लाके क्या बोला गया है कि जेन 4 काम नहीं कर रहा है। तो दिस इज हैपनिंग रियलिटी, मतलब ये हो रहा है। क्यों हो रहा है ये चीज? ये इसीलिए हो रहा है कि जैसे पीसी फायर हो गया, कोई भी कंपनीज हो गए बड़े, दे डोंट वांट अस टू गेट क्यूर्ड, नो, दे जस्ट वांट अस टू गेट डिलेड। समझ पा रहे हो? एस्थमा का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, बस इनहेलर बेचेंगे, ठीक है। कैंसर का ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं करेंगे, केमोथेरापी को कंटिन्यू करेंगे। शुगर का, जो भी डायबिटीज का प्रॉब्लम है, उसको क्योर नहीं करना है, इंसुलिन को कंटिन्यू करना है। तो यहां पे वहां पे कुछ बताया गया था कि न्यू फिर से R&D होने वाला है। अब ये जो है ना, फार्मा कंपनीज के लिए बहुत ब्यूटीफुल शिफ्ट है। R&D के लिए उनको सब्सिडी मिलेगा ना, तो दे कैन इन्वेंट न्यू एंड बेटर वेज टू यू नो गेट पीपल टू गो मोर लेंदी। मतलब एक ट्रीटमेंट अगर 1 साल में होता था, उसको 4 साल खींचेंगे। आप मारेंगे नहीं, आपको मारेंगे नहीं, मरने भी नहीं देंगे। नो 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 नो, खींचेंगे, चूसेंगे पूरा। समझ पा रहे हो? दैट इज द रीजन मैं बोला कि फार्मा वाला चीज ये अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, अच्छी बात है, कैंसर क्यूरिंग मेडिसिन पे टैक्स नहीं है, टैक्स को एग्जाम कर दिया है, लेकिन मेडिसिन कहाँ है कैंसर क्यूरिंग? मेरा वो पॉइंट है। एनीवे, ये एक था। और क्या पॉइंट था हम डिस्कस करने वाले थे? ये हो गया हेल्थ केयर का। हाँ, अर्थ माइनिंग जो मेटल वाला चीज है, उस पर बहुत अच्छा पार्ट है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, बजट जो स्टार्टिंग हुआ ना, इट वाज गुड। पार्ट ए का फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छा था। पार्ट ए, इनफैक्ट पार्ट ए अच्छा ही है, बस वादे थोड़ा ज्यादा हो गया। मतलब ऐसा हो गया कि कोई कॉर्पोरेट में आपको आके कोई टारगेट पूछ रहा है, आपका टारगेट है 10 क्लाइंट को लाना, आपका बॉस आपको टारगेट पूछा, आप बोल रहे हो मैं आज 1 घंटे में 10 लाऊंगा, नेक्स्ट घंटे में 20 लाऊंगा, 50 लाऊंगा। एट द एंड ऑफ द डे आपका बॉस देख रहे हो कि आपने 100 वाला टारगेट दे दिया, तो क्या वो पूरा हो पाएगा? पॉसिबिलिटीज आर वेरी वेरी लो। प्रोबेबिलिटीज देयर, बट पॉसिबिलिटीज आर वेरी वेरी लो। एनीवे, तो वही चीज है कि मेटल वाला जो चीज है वो अच्छा है। अर्थ माइनिंग, जो मिनरल्स, अर्थ मिनरल्स पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। मतलब क्या है, स्पेशियस मिनरल्स हो गया, आयोडीन्स हो गया, सॉल्ट्स हो गया, बहुत सारा चीज़ें हो गया, उन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, उनको प्रॉपरली किया जाएगा। तो ये एक अच्छा न्यूज़ है, ये एक अच्छा है कंपनीज के लिए। ठीक है, उसके साथ साथ और क्या हमने डिस्कस कर रहे थे हम? हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा खासा, इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा खासा बात हुआ है। रेल्स बनने वाले, तो रोड्स बनने वाले। अब पता नहीं, ये बीच में से फाड़ दिया, मोड़ दिया, ऐसा रोड बन जाएगा तो क्या होगा, स्पाइरल बन गया। अब देख रहे हो, ऐसे ऐसे घूम के चलना है, तो अलग ही होने वाला है वो चीज़। हाँ 10.56 पे प्रॉफिट था, अभी लॉस है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सिल्वर एंड गोल्ड नीचे ही गिर रहा है। ट्रेड क्यों करते हो बजट पे? मुझे समझ नहीं आता। गो फॉर फॉरेक्स। देखो, इंडियन मार्केट और क्रिप्टो कर रहे हो, जिंदा हो। फॉरेक्स करोगे मर ही जाओगे, नॉट बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी एंड ऑल। फॉरेक्स सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे अगर मेरा बस चले, मैं भी फॉरेक्स में शिफ्ट हो जाऊंगा, लेकिन गवर्नमेंट एंटी फॉरेक्स है। ठीक है, तो फंसे नहीं ना वहां पे। इसीलिए दूर से, हम बंगाली में कहावत होता है, दूर थे काशबन घनो लगे। मतलब दूर से जंगल बहुत मतलब घना दिखता है, अच्छा दिखता है। जैसे सामने जाओगे ना, तब आना शुरू हो जाएगा। तो वही चीज़ है कि करो फॉरेक्स, अगर इतना ही करना है करो, कोई दिक्कत नहीं। किसने रोका है? क्योंकि क्रिप्टो और जो इंडियन मार्केट है, वहाँ पे तो रेगुलेटरीज है एंड एवरीथिंग है ना। तो फॉरेक्स में क्या होगा ना, आप करोगे कुछ नहीं बेटा, एक दिन में काटेगा पूरा मुंडी, क्या पूरा घर उड़ा के लेके चला जाएगा। तो रिलैक्स प्लीज। तो ये आप बीजेपी अपनी खबर खुद। व्हाट इज द फ्यूचर फॉर न्यू ट्रेडर्स? कॉमोडिटी, देख लेना ये चीज को। MCX, अभी तो MCX नहीं है, MS वो MSMX है। क्या नाम बदल गया उसका? MSMEI है शायद, MSMI है शायद। ठीक है, यही है बजट, मोटा मोटा यही है बजट ओवरऑल। पार्ट ए वॉज गुड, बहुत वादे हुआ है पार्ट ए में। बाप रे बाप, क्या क्या वादे हुआ है। मतलब कैश्यू का अलग का बोर्ड, कोकोनट का बोर्ड, माय गॉड। डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट में कंटेंट क्रिएशन के लिए कोर्सेस। गुड, दैट्स ग्रेट। MSC, हाँ सॉरी, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज है। MCX था पहले। हमारे दिमाग में MCX ही घूमता रहता है। एनीवे, तो वही है। MCX डाउन 15%। वो तो सारा ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म वगैरह वो सारा चीज़ें होगा, बट देखते हैं स्वीप होता है कि नहीं होता है। एनीवे, इट कैन बी अ गुड स्वीप। ठीक है, इट कैन बी अ गुड स्वीप, लेट्स सी। बट ये बाईबैक वाला नहीं करना चाहिए था बॉस। इसमें ना, मतलब ये चीज़ ना, सबसे STT बढ़ाए हो ना, ठीक है चलो,
100 रुपए में से अगर 30 रुपए चला जाता था, 32 रुपए जाएगा तो चलो वो भी संभाल लेंगे, लेकिन 100 रुपए कमाने के लिए लिक्विडिटी तो चाहिए, हिलेगा तभी मिलेगा। मतलब अगर एक इंस्ट्रूमेंट दिन में 100 रुपए हिल रहा है तब ना जाके हम उससे 20 रुपए 30 रुपए, बहुत अच्छा हो तो 40 रुपए निकाल पाएंगे। लेकिन अगर कोई इंस्ट्रूमेंट 10 रुपए हिल रहा है तो कितना निकालोगे? बहुत अच्छा हो गया 5 रुपए 6 रुपए, समझ पा रहे हो ना? वो चीज चाहिए। टैक्स बढ़ा रहे हो ना, कमाने का मौका भी दे दो। फिर अभी आगे बोल दो लॉट साइज घटा देते, एसटीडी बढ़ा दिया, एसटीसीजी को 20% ला दिया, एलटीसीजी 15% ला दिया, सारे एफआईआई टैक्स माफ, बाईबैक पे कोई टैक्स नहीं। कोई जितने भी पुराने पके हुए ट्रेडर्स हैं ना वो खुश के खुश बैठे रहेंगे, कोई बात नहीं, आप टैक्स ले लो। वाई एमसीएक्स गोल्ड प्राइस नॉट मैचिंग विद शॉपकीपर, ये तो 24 कैरेट का है, आप 22 कैरेट का प्राइस देखो, उसके साथ साथ 3% जीएसटी लगाओ, ठीक है, और थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता ही है। एनीवे एसएसटी कम होगा, कोई ना, चलो एवरीबॉडी। तो ये था मोटा मोटा बजट। अब नेक्स्ट प्लान क्या है? नेक्स्ट प्लान यही है कि इनका काम हो चुका है, ठीक है, अच्छा स्वीप तो दिख रहा है, बट वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो चुका है, तो बी कॉशियस, वेरी वेरी कॉशियस, डू नॉट ट्राई टू ट्रेड, ठीक है। एक चीज को समझे, इनको समझे, इन चीजों को ना समझिए। 3 हफ्ते पहले से सिल्वर का मार्जिन बढ़ा दिया गया था। क्यों बढ़ाया गया था? ठीक है, मैं इन पे बात इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि यार बहुत बहुत बात किया है ऐसे, मतलब अभी ना और अच्छा नहीं होता है। चुपचाप अपना काम करो, निकल जाओ। सिल्वर पहले जितने भी मार्जिन पे लिया जाता था, उस 3 हफ्ते पहले से, उसका 3-4 हफ्ते पहले से सिल्वर का मार्जिन 3 गुना कर दिया था। मतलब अगर आप 100 रुपए से 10 रुपए से 30 रुपए का सिल्वर ले पाते थे, अभी आपको 30 रुपए लगेगा वही 30 रुपए का सिल्वर। या फिर मान के चलते, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर आप 30,000 रुपए से 3 लाख का सिल्वर ले पाते थे, अभी आपको अभी 90,000 रुपए लगेगा, काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये मार्जिन को इंक्रीज क्यों किया गया? ताकि लिक्विडिटी को सकअप किया जाए, मतलब और पैसे को सिस्टम पे लाया जाए, ताकि ये जो क्रैश हुआ ना, यहाँ पे ट्रिलियंस क्यों वाइप आउट हुए, बिलियंस क्यों वाइप आउट हुए, दैट इज द रीजन। दे दबा के ईटीएफ्स को इतना मतलब हाईली पुश क्यों किया गया? तो वही बात है, विक्स अभी भरा हुआ है ना, इक्विटी मार्केट देखो, इक्विटी मार्केट स्टेबल है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, बट क्या ही बोले, स्टॉक देखो क्या हाल है। एनीवे थोड़ा हल्का रखना ट्रेड को, ठीक है, एक आध दिन रुकना पड़ेगा हमें। वैसे भी आज संडे है और मुझे समझ नहीं आ रहा है संडे में कौन, मतलब संडे का बजट है फिर भी मार्केट को इतना तोड़ा जा रहा है। मतलब आप समझ पा रहे हो न्यूज़ कितना खराब है। नॉर्मली जब आप ऐसे सोचो, मुहूर्त जब नॉर्मली हॉलीडेज पे होता है, लिक्विडिटी नहीं रहता है, ठीक है, बट संडे का मार्केट है फिर भी इट्स वेरी वेरी वॉलेटाइल एंड एक्टिव बिकॉज ऑफ दोज एक्सट्रीमली बैड न्यूज़ मैन, दोज आर नॉट राइट। मतलब एज अ, मतलब क्या ही बताए, ठीक है, जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उनको अच्छा खासा फायदा मिलेगा। धंधा खोलो बॉस, कोई भी दुकान खोल के बैठ लो, फिर भी चलेगा। अभी ट्रेडिंग का ज़माना मतलब थोड़ा हैम्पर में है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आई एम नॉट जस्ट अ कोर्स सेलर और एनीथिंग, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा आपको कि यू नो ट्रेडिंग बढ़िया है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। दैट दैट रियलिटी इज रियलिटी। 2026 थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है न्यू ट्रेडर्स को। दोज हु आर इनटू ट्रेडिंग बिजनेस, दोज आर ओके, 2-3 साल हो गया आपको तो ठीक है, बट दोज हु आर यू नो प्लानिंग टू कम इनटू ट्रेडिंग, 2026 रुक जाना, थोड़ा पैसा जमा लो। 2026 में पैसा कमाने के लिए बहुत बहुत वेज है, कुछ भी कर लो, नारियल पानी बेच लो फिर भी कमा लोगे अच्छा खासा, ठीक है, अच्छा खासा आपको मतलब सब्सिडी दिया जाएगा नारियल खरीदने में, बेचने में। तो वो पैसा जमा के 2027 पे आओ। 2026 विल बी वेरी वेरी हार्ड फॉर न्यू ट्रेडर्स, आई एम टेलिंग यू गाइस, आपका मन टूट जाएगा। किसने बोला ऑप्शन ट्रेडिंग में फ्यूचर नहीं है? बिल्कुल फ्यूचर है, बिल्कुल फ्यूचर है। इंडिया एक दिन में आज़ाद थोड़ी हुआ था। अब अगर 1920 के लड़ाई हर के कोई बोल जा देता कि तो हमारा आज़ादी का कोई फ्यूचर नहीं है, तो बेकार की बात है। नहीं, बिल्कुल ऑप्शन ट्रेडिंग में फ्यूचर हमेशा रहेगा। बात सिर्फ साल का है। 2026 मुझे एज अ ट्रेडर ना एक ग्लूम ईयर दिख रहा है, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस है। 2027 कैन बी वेरी गुड। यू थिंक योरसेल्फ ना, 2016, 17, 18 वाज वेरी लो फॉर अ नॉर्मल ट्रेडर।
19 was a bit okay. 20 was very bad at the first half and then the boom came. Then 20 raced, 21, 22, 23, 24. Euphorian market, euphoria for traders. 25 से slow poison शुरू हुआ. 26 will be a kind of blooming market. 27 can be again good. Who knows? ठीक है, चलो 32 लाख का पोर्टफोलियो सेल कर दिया. अच्छा, पैनिक पे नहीं करना है. तो आपका मंथली एक्सपायरी वाला सेटअप देखा है, एक इंस्टा पे आया है हीरो जीरो बोल के, लिंक व्हाट्सअप करता हूँ, देखना. हाँ बताना, भेजना अच्छा लगता है जब कोई कॉपी करता है. तो ये आप बीजेपी अपनी कवर को, हाँ हाउ अबाउट इंट्राडे ओनली इन स्टॉक्स. नहीं, इंट्राडे के में मार्जिन कहाँ है. पहले के जमाने में 20 टाइम्स लीवरेज देता था, फिर 14 टाइम्स, अभी 4 टाइम्स. इंट्राडे इज अ वेरी रिस्की बिजनेस. वी ऑल नो दैट. वी नीड टू एक्ट वेरी फास्ट. जल्दी करना है ना, दिमाग में हर एक लेवल्स को के साथ बैठना है. अगर ये इतना एंटी ट्रेडिंग पॉलिसीज 1990s पे होता तो कोई आज बिग बुल नहीं बनता, कोई आज नहीं होता. तब के जमाने में 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 500 टाइम्स ओपन लीवरेज दिया जाता था विदाउट एनी कोलैटरल. बस फेस देख के 1 करोड़ है तो लो आप 100 करोड़ का माल उठाओ. बाजू वाला कोई न्यूज आ गया, कुछ मिल गया, अच्छा लेवल मिल गया, 100 करोड़, 1 करोड़ से 100 करोड़ का माल उठा के 120 में स्क्वायर ऑफ कर दिया. 19 करोड़ के में से 50 लाख टैक्स दे दिया, 18 करोड़ का तो सीधा मुनाफा. समझ पा रहे हो? अभी वही चीज क्या है, 1 करोड़ से आप 4 करोड़ का माल ले पाओगे. 4 करोड़, वो भी कभी किसी स्टॉक में 3 करोड़, क्या ही कमाओगे. इंट्राडे नहीं, इंट्राडे स्टॉक्स में तो बहुत ही मतलब बेकार बिजनेस हो चुका है. ऑप्शन एंड फ्यूचर फिर भी ठीक है. अब कांग्रेस को वोट देके आऊंगा तो ब्रोकर ही नहीं चलेगा, फिर ब्रोकर ही चला जाएगा देश से. चलो एवरीबॉडी, वन ऑफ द वर्स्ट बजट मेरे दिखा हुआ. 2000 मतलब इतना दिन से बजट देख रहा हूं, ठीक है. इंटरिम बजट भी इतना खराब नहीं था. वन ऑफ द वर्स्ट बजट, वन ऑफ द वर्स्ट बजट. जो जिस बार एलटीसीजी और एसटीसीजी को बनाया ना, उस बार भी इससे बेटर बजट था. क्योंकि देखो सीधी बात है, अगर आप मिडिल क्लास को मारोगे मार्केट हिलेगा नहीं, ठीक है, मिडिल क्लास मरेगा. रिच पीपल को मारोगे ना तो मिडिल क्लास कमा भी नहीं पाएंगे. तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. कंपनीज को अगर मारेंगे तो फिर हम ट्रेडर्स का क्या होगा. दुबई जाकर फॉरेक्स करना सेफ है. दुबई का ही रेसिडेंसी ले लो, यहाँ पे तो एनआरआईज का कोई भरोसा है नहीं, ठीक है. दादा प्लीज তুমি একবার থেকে একটু ডেইলি লাইভ আসো, জানি অনেক বিজি থাকো তুমি, তাও ঠিক আছে, দেখছি, ট্রাই করছি. 2025 में 19,000 करोड़ का भी बाईबैक हुआ है. क्यों? 2025 का मार्केट बाईबैक जैसा क्या ही था वैसे. देखो बात सिर्फ 19,000 करोड़ का बाईबैक का नहीं है, ठीक है. बात है कि गवर्नमेंट एंटी ट्रेडिंग पॉलिसीज पे है या नहीं है. एनीवे हो सकता है ये चीज़ पे कुछ नया तोड़ लेके आए, ठीक है. बाईबैक ना हो तो कुछ और, मार्केट तो रहेगा, हमेशा ही रहेगा. थोड़ा मैनिपुलेशन पे, मतलब कभी कभी क्या होता है, मैनिपुलेशन घटाने के चक्कर में और मैनिपुलेशन होता है. तो लेट्स सी हाउ इट एंड्स अप, ठीक है. वल्नरेबिलिटी थोड़ा बहुत है मार्केट पे. मेरा दुबई में, मेरा बाहर में कोई एसेट नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं है दुबई जाने का. मेरा गोल सिंपल था, बॉर्न इन इंडिया, डाई इन इंडिया. लेकिन जिस तरह का चीज़ें हो रहा है, मतलब अब ज़्यादा जल्दी मर ना जाओ. रोटी खाना तो है बॉस. जितने भी लोग 1 महीना हुआ है ट्रेडिंग पे आए हो, 2 महीना हुआ है ना, हल्का रखना ही है साल को. देखो बोलने को तो मैं बोल सकता हूँ जाओ मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो, बट एक होता है बोल देना, एक होता है रियलिटी को फेस करना. 2026 में ट्रेड करना विल बी हार्ड फॉर यू, ठीक है. एटलीस्ट फर्स्ट हाफ, जून जुलाई के बाद ये चीज को आप देख सकते हो. तो तब तक व्हाट इज बेटर टू डू, आप कुछ करो और कैपिटल को और बढ़ा लो, ताकि जब आओ तो बेटर माइंडसेट पे आओ. ओके. सिल्वर और गोल्ड पे थोड़ा और डाउनसाइड का लेवल में दिख रहा हूँ, डायरेक्ट लेवल नहीं बताऊंगा.
उस बता दिया तो मैं बाई नहीं कर पाऊंगा एज अ सेबी आ रहे। तो सिल्वर और गोल्ड डाउन साइड देख रहा हूँ। ऑर्डर ब्लॉक्स को फाइंड कीजिए, डिमांड एरियाज को फाइंड कीजिए, दैट विल बी अ गुड बाइंग जोन। ठीक है, सजेस्ट फ्यू पेनी स्टॉक, सजेशन नहीं दूंगा, एक स्टॉक है अर्थ स्टील एंड अलॉयज, इसको देखना। ठीक है, अर्थ स्टील एंड अलॉयज इसको देखना। पेनी मतलब बिल्कुल पेनी, इलिक्विड स्टॉक है, याद रखना चीज को। ठीक है, मैं ये लेवल से इसको देख रहा हूँ, फिर तो मेटल के अब ट्रम्प चाचा ने बहुत दिक्कत कर दिया, अब यहाँ पे जाके अगेन गवर्नमेंट पॉलिसीज पे आया है, तो इट हैज ह्यूज पोटेंशियलिटी, लुक आउट फॉर इट। ओके, लेकिन इस पे अगर आपको पैसा डालना है तो भूल जाना, हो सकता है 3 साल में कुछ नहीं भरा, फिर 1 साल में अरे बाप रे 30 साल का पैसा दे गया, लेकिन वो 3 साल में अगर आप हड़बड़ाए तो दिक्कत है बॉस। ठीक है, चलो एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी संडे। संडे बॉस, जाओ थोड़ा बहुत दिमाग को फ्रेश करो, इट्स संडे, कम ऑन, जाइए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली। और दोज हु आर 1-2 महीना हुआ है ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप पॉसिबल हो तो थोड़ा सा हल्का रखो, जीरोधा वार्सिटी पढ़ो, पेपर ट्रेड करो और फोकस ऑन अर्निंग मोर मनी फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ इनकम। और जिनका 5-6 महीना ऑलरेडी हो चुका है, 1-1.5 साल हो चुका है, आप हमें तो करना ही है ना, हम तो छोड़ नहीं सकते इसको। जस्ट बिकॉज बारिश ज्यादा आ गया तो हम काम पे नहीं जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो हम एक्सपीरियंस्ड है, तो हमारे लिए कोई कंसेशन नहीं है। जो न्यू ज्वाइनर्स है उनको थोड़ा बहुत हल्का में हाथ ले सकते हैं। तो जो लोग वही है, दोज हु आर ओल्ड, पुराने चावल है, नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गीता 1.5 का दिया हुआ है लिंक, स्विंग शास्त्र का भी दिया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग में मजा आ सकता है, ये चीज देख लेना, जाके जरूर ज्वाइन हो जाना, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे वेबसाइट का लिंक, एवरीथिंग इज देयर। दोज आर सीरियस इनटू ट्रेडिंग अबाउट इट, गो एंड ज्वाइन द कोर्स। और जो लोग बिल्कुल नए हो, 1 महीना हुआ है, 1.5 महीना हुआ है, मैं आपको बोलूंगा यू डोंट नीड टू बाय समथिंग एनीथिंग राइट नाउ, किसी से भी कुछ भी मत खरीदिए, थोड़ा सा पेपर ट्रेड पे फोकस कीजिए। दिस ईयर कैन बी अ लिटिल बिट ऑफ रफ पैच, तो इसके लिए दोज हु आर रेडी फॉर इट, कम ऑन लेट्स ज्वाइन, आइए सीखिए और फिर गेट बैक इनटू बिजनेस। आज का मेरा प्लान कोई प्लान नहीं है, संडे में मैं क्यों ट्रेड करूंगा, पीस ऑफ माइंड खराब थोड़ी करना है। चलो एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली एंड हैप्पी संडे एंड हैप्पी बजट।